ओके मैंने डिसाइड किया है, जो मिस हुए वो मिस हुए। तो या मैं जस्ट 30 क्वेश्चंस करूंगा, मतलब मैक्सिमम 30 क्वेश्चंस करूंगा। या उसमें मिस हुए जो भी हुए फर्क नहीं पड़ता, वी जस्ट डू इट। लेट्स गो। 12th क्वेश्चन। 12 is a loop of radius r and mass m is rolling without slipping with a velocity v towards a step height p on horizontal surface। अच्छा ये पहले रोल कर रहा है फिर हाइट पे गया, whatever। Assume that the loop does not rebound and no slipping occurs at the point of contact होगा। When the loop rolls up, okay, what is the minimum velocity v needed for the loop to roll up the step? ठीक है, तो इसको बस ऐसे जाना है ऊपर and then yeah it just has to go like that, right? So what's the minimum velocity required? Of course, and it should not slip and whatever। Okay, height क्या है, कुछ भी दे दी, b लेस देन r जो भी है। ओह दिस इज काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेटेड। सो इसका एंगुलर मोमेंटम वगैरह अपन निकाल सकते हैं। यस, सो वी नो कि अगर इसको जस्ट वहां पे आके रुकना है, दैट पॉइंट लाइक एनर्जी कंजर्वेशन पर कर सकते हैं शायद से, राइट? क्योंकि हमें पता है कितनी हाइट इंक्रीज हो गई है। मे बी द थिंग इज कि राइट, ओके, नो स्लिप ऑकर्स। तो जब ये इस पे रोल कर रहा होगा अबाउट दिस पॉइंट, क्या 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 फोर्सेस इस पे एक्ट करने वाले? एंड स्लिपिंग है नहीं, आई नो, बट हाउ डज इट फील नेचुरल? क्योंकि टेंशन तो सॉरी इस पे नॉर्मल है, दैट्स एक्टिंग लाइक दैट। ग्रेविटी इस पे ऐसा एक्ट कर रही है, so एक कंपोनेंट ऐसा है, एक कंपोनेंट ऐसा है। आई गेस दिस कंपोनेंट ओवर पावर्स अवर या अवर नॉर्मल फोर्स ऑफ कोर्स। सो फॉर एग्जाम्पल अगर सिर्फ ये ऊपर जाके वापस नीचे आ गया तो वो कब नीचे आने वाला है? दैट्स द क्वेश्चन, जब ये नो लॉन्गर आगे कंटिन्यू ना कर पाए। वेट, ये तो सही नहीं होगा, राइट? ओके, सो द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड फॉर दिस, ओके। और ये सब कुछ क्या स्क्वायर रूट वगैरह में, राइट? आर स्क्वायर रूट ऑफ जी बी एंड नॉट एग्जैक्टली द थिंग, आई मीन। और इसमें ये नीचे क्या है, 2r - b एंड गॉड। सो फॉर एग्जाम्पल अगर v जीरो है, सॉरी b जीरो है, देन दिस विल टर्न आउट टू बी जीरो। वो हो रहा है हर जगह पे। ओके, इट्स काइंड ऑफ वियर्ड इजंट इट? या क्या कंडीशन है जो कि सेटिस्फाई होनी चाहिए हर हर पॉइंट पे? ये मूव कर रहा है एंड देन एनर्जी कंजर्वेशन, मुझे नहीं लगता दैट्स द थिंग दैट शुड वर्क, बट स्टिल एनर्जी कंजर्वेशन ट्राई कर सकते हैं। देन नो, यू डोंट वांट टू बी डूइंग एनर्जी कंजर्वेशन, दैट इज टू मच, राइट? मतलब उससे अपने को नहीं मिलेगा आंसर, वी नो दैट, राइट? ऑफ कोर्स नो स्लिप कंडीशन है, हॉरिजॉन्टल सरफेस है, बिना स्लिपिंग के आगे मूव कर रहा है। हुप, ओके, सो इट्स नॉट अ डिस्क, इट्स अ, ओके, इट्स सम काइंड ऑफ सर्कल जो भी है। ओके, एंड इट डज नॉट रिबाउंड एंड नो स्लिपिंग ऑकर्स व्हेन द हुप रोल्स अप। ठीक है, सोचो क्या होगा इनिशियली, क्या होगा इनिशियली? जस्ट इस पे चिपक जाएगा बेसिकली, राइट? चिपक जाएगा बोल रहा हूँ मैं। व्हाट विल हैपन इज लाइक कि इसके अबाउट रोटेट करना शुरू हो जाएगा। नॉर्मल जो है दैट्स, या ओके, दैट्स दिस ग्रेविटी दैट्स डूइंग थिंग। या ओके, दैट एक कंपोनेंट है दैट्स डूइंग द थिंग, ऑफ कोर्स। ओह या ओके, अब मुझे समझा क्या हुआ। इसकी वेलोसिटी सो डायरेक्टली अपने को नहीं अप्लाई करना है, जब ये इससे इस पे टच होगा एट दैट पॉइंट इसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज जाएगी, एंड देन फिर अपने को काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन करते आ सकता है, राइट? या दैट्स द थिंग, लेट्स डू द थिंग, सो ऑफ कोर्स एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होने वाला है, दैट्स द ओनली थिंग। और ये है एट सेंटर ऑफ मास की हाइट क्या है? सो टू दिस गाय इट्स जस्ट r - b एंड इट्स गोइंग लाइक v ओवर देयर, और ये रोल कर रहा है ना, रोलिंग, राइट? ओके, सो अबाउट सेंटर ऑफ मास क्या है? mr² टाइम्स ओमेगा, which is basically like mvr, right? Because omega is, yeah, just v upon r. That should work, of course. So that's about angle, that's about the center of mass plus you know center of mass की angular momentum कितना रहने वाला है? So it's going to be mv times ये perpendicular distance, which is just r - b. That's going to be 2 mvr, mv तो common ले लो, 2 mv, and then you got, oops, mv common लिया, 2r - b, right? That's the angular momentum. And now it's going to be equal to, so इसके about inertia क्या है? It's going to be mr plus mr squared is like 2 mr squared, so 2 mr squared times omega or whatever, right? अच्छा, अपने को angular momentum मिल गया ना, why do we even worry about this thing? So right,
Initially this is the angular momentum, इसका square कर दो and this thing squared upon 2 times the inertia about this point, right? That will be the energy because half I half तुम्हें पता है कैसा है. So inertia कितना है? 2 mr squared, right? So क्या हो जाएगा? 4 mr squared. That's the thing, of course. Yeah, that makes sense. And ये जो चीज रहने वाली है, that's r over there, right? No, that's v actually. Fine. So it's like ये m का square cancel नहीं हुआ in fact right away. ठीक है, okay, no big deal. m v square 2r minus b का square upon r square 4v है यहाँ पे. That's the initial kinetic energy. That should be equal to final kinetic energy, which is 0 plus the potential energy. So ये gain कर लेगा, which is कितना ऊपर गया? It's just mgh. So mg times h कितना है अपना? It's gonna be r minus b because not r minus b, just b actually. Right, that's the thing. So of course ये गया मतलब कि v times 2r minus b upon 2r, that's equal to square root of gb. That makes sense. So v is just equal to 2r square root of gb upon 2r minus b, which is what option? कहाँ पर है ये? It's option C. I don't know ये सही है कि नहीं, ये पूरी कंडीशन है कि नहीं, but just move on. Next question. Next is question number 13. 13 is a uniform cylinder of mass m and radius r rolls on a fixed cylindrical surface of radius capital R. Okay, ये क्या है? ये सिलेंडर है and it rolls on this cylindrical surface at a certain instant. The line OC, कौन? अच्छा ये line has an angular velocity omega and angular acceleration alpha. What? The line OC. Okay, that's interesting. Yeah, okay, and the acceleration of point. So point of contact P with respect to the surface. Sorry, what? ये fixed cylindrical surface है at a certain instant. The line OC is an angular velocity omega. Okay, so basically C and C by O has omega angular velocity. And ठीक है, acceleration of point of contact P with respect to the surface. I think with respect to O basically, right? तो वो कितना रहने वाला है? No big deal. So you know इसका acceleration. We just want the acceleration, right? Okay, cool. Oh, and by the way, ground frame में है, right? So and omega भी है यहाँ पे, so you'll also have that acceleration. Cool. And it's no slip, of course. There we go. They should be doing it. So इसका acceleration कैसा है? It's just r alpha in this direction, right? That's all it is. Yeah. और ये जो point P है, so with respect to the center of mass, इसका acceleration कितना होने वाला है? So it's omega as seen by this point, right? Of course. Which means इसका like okay v upon क्या है ये? Total कितना radius है? So this is a small radius r and capital this, like r plus r. That's equal to omega. और इसका जो actual angular velocity रहने वाली है, right? What is that going to be? That's omega naught. बोल दो इसको, right? And this point of contact is of zero velocity, of course. So v is really just omega naught times r. So omega naught times r upon r plus r is equal to omega जो भी है. So you got omega naught through that. Omega naught is just equal to r plus r upon r and then omega, right? And of course p का acceleration with respect to c क्या आने वाला है? ऊपर it's just omega square r, of course. So like ये ऐसा है and then upward acceleration as well. It's just omega square r, which is ये चीज का square. So ये चीज का square times r. Yeah, that should be the thing. So this is gonna be capital R plus small r का square upon r times omega square. So ये ऊपर है and this is like that. What do you want? Of course the magnitude, right? Okay. But इसमें कहीं वो सब है नहीं. This is not good here. That's not here. Wait, what? Oh, of course. The thing is कि ये center of mass का भी खुद का acceleration रहने वाला है in this direction. So ये तो है ही ऊपर प्लस एक और टाइप का एक्सेलरेशन आ जाएगा because center of mass is moving like that, right? So right, that's just gonna be like omega square capital R plus R, I should say. Okay, and that's in this direction, I guess. Yeah, does that make sense? Okay, sure. I guess that should be the thing. ये ऐसे जा रहा है and this is R alpha in that direction and oh shit, अगर ये एंगुलर एक्सेलरेशन इसका है सो इट्स वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, तो p का भी इंक्रीज हो रहा होगा, राइट? ये तो काफी अजीब है यार. या
कोर्स काफी अजीब है इनफैक्ट. सो पी का भी अल्फा होगा कुछ तो भी विद रिस्पेक्ट टू सी, दैट इज वो कितना है. आई मीन यू गॉट दिस थिंग राइट. सो इसको जस्ट differentiate कर डाल, just get alpha naught is equal to r plus r upon r, and you got alpha, of course. That's the thing. So r alpha is direction में भी, that is ये चीज times small r, I guess that's going to be capital R plus small r times alpha in that direction. Yes, I guess so. Oh, and this should be capital R alpha, by the way. No, it's capital R plus small r alpha. Okay. और यहाँ पे क्या था, by the way? It was omega square r square center of mass, of course. Is that right? It must be right, of course. Yep, it's right. ये ओमेगा स्क्वायर आर रहने वाला है इन द अपर डायरेक्शन, ऑफ कोर्स. आर प्लस आर वही सेम चीज, और इन डाउन डायरेक्शन. फाइन. तो ये कैंसिल हो गए, फॉर्चुनेट इनफ. तो इसका मतलब क्या है कि सब अपने को ये चीज करनी है, एंड वी हैव टू डू दिस थिंग. ये तो वैसे भी उसके पहले का था. सो यू गॉट ओमेगा स्क्वायर एंड देन आर प्लस आर कॉमन ले लो. व्हाट यू गेट? yeah, so just r plus r upon r minus 1, right? Of course, that just capital R upon small r. So omega square ye cheese upon small r, which is what option? It's A, I think. Next question, 14th question. 14th is a uniform rod of length 2L and weight W is lying across two sharp contacts on the same level distant T apart. Uniform rod 2L, weight जो भी है, okay, lying across two sharp contacts on the same level, okay, distance T apart. Oh, you mean like ठीक है ऐसा, ये एक contact है, fine, and this distance is D. Fine. If neither sharp contact can stand a force greater than T, length of the rod which can project beyond either sharp contact cannot be greater than. Okay, so अपन सोच रहे हैं कि एक sharp contact ऐसा है, then right, और ये length जो है that's the maximum length that you can have, and neither of the contacts can have a force greater than T, right? Okay. और पहले से करना है, then so equilibrium condition, right? Equilibrium condition. So of course the center of mass must be between these, because otherwise ये कैसे हो सकता है, ये खींच तो नहीं सकते. So that's got to be the thing. तो ये something like ऐसा है, ठीक है ना, जो भी है. We'll just say कि, and we want this length, of course, right? So let's call this as x. Yeah, यहाँ से यहाँ तक का L upon 2 रहने वाला है, right? So this thing is going to be L upon 2, sorry, L होने वाला, right? So this is L minus x, and this thing is D minus ये चीज, of course. That's going to be just D plus x minus L, I guess, right? So यहाँ से F1 force आ रहा है, यहाँ से F2 force आ रहा है, उनका sum जो है that's going to be mg and what not. Yeah. So F1 plus F2 is equal to mg, and F1 times ये चीज, so D plus x minus L plus F2 times ये चीज L minus x. Oh, these are actually just equal because अपने length की है, not signed length. So there we go. These must be the same, of course, right? Okay, let's see क्या हो रहा है यहाँ पे. So F1 and then D plus x minus L यहाँ पर है, and then वहाँ पे वो है. Oh, so it's like F1 and then you got D. Oh yeah, so like F1 times D is equal to F2 times, इसको उधर भेज दिया, so I should say it's really like equal to L minus x times F2, और फिर यहाँ पे L minus x है but negative में, so इसको उधर भेज के F1 हो जाएगा. This is going to be what? Yeah, just mg times L minus x. So F1 is just L minus x upon D times mg, but this must be less than or equal to T, right? So you can actually figure out something for x. So this just means कि L minus x is less than or equal to TD upon mg, whatever. I guess so. Force, distance, shoot. That's correct.
x इज बिगर देन और इक्वल टू एल माइनस टी टी अपॉन एम जी, और वो कहाँ पे मिलेगा मुझे? Ooh, that's weird. ये सब क्यों? It's supposed to be this thing, right? Project beyond either sharp context. It's supposed to be this, of course. Force greater than t. That's the thing. That's F1. Oh wait, I guess कि F2 जो है वो important because यहाँ पे force extra रहने वाला, right? We want x to be bigger. Right. Okay. तो ये condition weak है in fact. अपने को इससे ज़्यादा अच्छी condition चाहिए. So what we can do is just say F1 is, फिर इस पे directly करते ना. Yeah. जान छोड़ो. F1 is just mg minus F2. So mgd minus F2d is equal to mgt minus mg x, right? This cancels somehow. Yeah, that's how it's supposed to be. I guess so. सही है कि नहीं है ये? It must be, right? वो L है वहां पे, D नहीं है. वही तो बोलूं कि इतना जल्दी कैसे मुझे आंसर मिल गया? It should have been L. और इतना simple answer, not possible, right? And that just means that F2D is equal to mg times t plus x minus L. अभी भी इसको L क्यों लिख रहा हूँ यार? T plus x minus L. That should be the thing. And this is of course less than or equal to t times d, right? So अपन x ढूंढ सकते हैं somehow. So t plus x minus L is less than or equal to tt upon mg. Oh, उसके से हमने को bigger than or equal to मिला था, अब less than or equal to मिल रहा है. Of course. So x is less than or equal to L plus td upon mg minus d, right? Which is like L minus of d minus d common there, minus d, and then you got 1 minus t upon mg, which is t upon w, I would say. So it's L minus d or w minus t upon w as supposed to be. So that's supposed to be option number D, right? Yeah, next question. Next you got 15th. So let's think about it. जब ये एकदम symmetric condition रहती है, then both of them must be mg upon 2, right? So whenever t is just w upon 2, ये चीज क्या हो जाएगी? It's L minus d times of w upon 2 यहाँ पे आ जाएगा, and then yeah, okay, this is d upon 2. So L minus d upon 2, yeah, makes perfect sense. बाकी conditions satisfy नहीं हो रही है, right? Okay, next 15th. A uniform rod is placed with one end on the edge of table. A nearly vertical position is then released from rest. Uniform rod placed with one end on the edge of the table. Achha. Edge of the table, fine. A nearly vertical position is then at nearly vertical position and then is released from rest. पूरा लिखते भी नहीं है. Find the angle it makes with the vertical at the moment it loses contact with the table. The edge of the table is sufficiently rough so that the rod doesn't slip before it loses contact. अच्छा, जैसा अपने को ये दिखना है कि कब contact. So of course friction infinity, friction coefficient infinity लगा दो, whatever. So सिर्फ यहाँ का normal zero जाना चाहिए, only then can it actually lose contact, right? Of course. And just slipping like this. Okay, cool. Slipping is it's rotating like that, right? Okay. And find the angle it makes with the vertical. Suppose ये theta बना रहा है like that. At that point, कितना cosine? Okay, so it's supposed to be L times 1 minus cosine theta. I would say L upon 2 क्योंकि yeah, this is over here. So mass times height times g, whatever. This thing is the energy it would have gained by that point. That's equal to ml squared upon 3. I should say half ml squared upon 3. And that times omega squared, right? So half pi omega squared. Of course, it's gonna lose the thing. So यहाँ से upon to cancel हो जाएगा. Just get this L also cancels, m cancels. क्या आ गया यहाँ पे? Just 3g times 1 minus cosine theta is equal to, ये तो उधर गया ना, या ये 3 वहाँ पे चला गया. यहाँ पे क्या है? L omega square, just that much. So ये condition है. What else do you have? So it's moving by omega square. L upon 2 is the force on this
टोटल बॉडी ऑफ कोर्स, राइट, बिकॉज सेंटर का पास इसे मूव कर रहा है. इस पे टॉर्क वगैरह भी है बट भूल जाओ उसको 2 मिनट के लिए, राइट. या सो दिस इज द सेंट्रीपिटल फोर्स. ऑफ कोर्स if this force is zero, then only then can it actually lose contact, right? Of course. And it's rough and everything, I get that, right? अगर ये कोई फोर्स अपने को लगाना रहेगा वो हो जाएगा अपने आप, right? वो फोर्स जीरो है वगैरह, you don't have to worry about that actually. Okay, you don't only have to worry about this kind of force, I guess. Yeah, right. Well, whatever, just do it. So uh, what was it made? Yeah, this must be equal to zero. So whenever omega is doesn't make any sense, does it? Yeah, right. Oh, there's gravity भी है ना यहाँ पे, वही तो बोलूँ मैं क्या मिस कर रहा हूँ उसमें. There's gravity as well. So whenever it loses contact, just before losing contact, ये force अपन minimize कर देंगे. So just gravity is the one providing the force. So ये यहाँ पे mg है, this is angle theta, this angle is theta as well. So like mg cosine theta is the centripetal force. That should be equal to m omega square r L upon 2, right? Okay, यहाँ से ये गया, all you get is just this thing. So omega square L should be equal to 2g cosine theta, but that means अपने को इनको equate करना है. 3 minus 3 cosine theta is equal to 2 cosine theta. So 5 cosine theta is equal to 3, which means cosine theta is equal to 3 upon 5. So cosine inverse of that. C is the answer. Next question, 16th. 16th is for a circular disc of radius r and mass 9m, a small disc of radius r upon 3 is removed from the disc. The moment of inertia of the remaining disc about an axis perpendicular to the plane of the disc and passing through O. कौन सा O भाई, कुछ दिया ही नहीं तुम लोगों ने. Okay, circular disc of radius r, ठीक है, आपने को फिगर तो दिख रही है. We'll just say ठीक है ये axis है I guess. So passing through this point, I don't know. Small disc of radius r upon 3 is removed. The moment of inertia of the remaining disc about an axis perpendicular मास दिया है whatever. अच्छा ये क्या है, r upon 3 और what? Of course that's r upon 3. तो इसका जो मास रहेगा that's going to be m because square. So yeah, the remaining disc about an axis. हाँ ठीक है ना, तो about this point, right? That's the thing. So let's do the thing, you know. Okay, तो इसका पहले inertia क्या था? It was just 9m times पूरा r यानी कि r squared upon 2. ये जो अपन ने डिस्क हटाई उसका इनर्शिया क्या रहा होगा अबाउट दिस पॉइंट. सो दैट इसका मास m रहा है, ऑफ कोर्स जस्ट m r एंड स्मॉल r स्क्वायर यूज करो मैं यहाँ पे अपॉन 2, जान दो क्या है, r अपॉन 3 यूज करते हैं. सो r स्क्वायर अपॉन 9 आएगा, राइट, 9 आएगा, यहाँ पे 2 भी आएगा, सो 18. दैट इनर्शिया अबाउट दैट अपने को ऐसे शिफ्ट करना है. कितने से शिफ्ट किया अपन ने, 2r अपॉन 3. सो जस्ट m टाइम्स इसका स्क्वायर. That's why I just 4 m r squared upon 9, right? अपने को subtract करना पड़ेगा, that's the thing. So m r squared common ले लो, which is supposed to be 9 upon 2 minus 1 upon 18 minus 4 upon 9 or whatever. यहाँ पे आ जाएगा minus 8 upon 9 I guess, because so 8 upon 18, right? Because yeah, just do something. So you take a minus 9 upon 18, that's just 1 upon 2. That's going to be 8 upon 2, which is 4. So 4 m r squared, right, which is option A. Hopefully, I don't know कितना गलत होता है ये, right? Whatever. Next question, 17. ज़्यादा easy लग रहा है, whatever. गलत हुआ तो हुआ. Okay, a small solid sphere of radius r can roll without slipping on the inner surface of a fixed large spherical shell of radius r bigger than r. Small solid sphere of radius r can roll without slipping on the inner surface of a fixed large spherical shell. बड़ा शेल इसके अंदर थोड़ा सा स्फीयर है. ओके, द पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशंस ऑफ द सॉलिड स्फीयर अबाउट इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन. तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ कोर्स, द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द सॉलिड स्फीयर अबाउट इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड कैन रोल. ओके ओके, इज गिवन बाय, ये तो काफी टफ होने वाला है. देखिए ये पीरियड, राइट. Yeah, we'll have to do this thing. Wait, I'm thinking. अच्छा, अगर अपन ने R को एकदम छोटा रख दिया, oh look, ये सारे जो है इन सब में right, एक काम करो ना, let R go to 0 basically, right?
then this whole thing becomes like yeah okay. और तुम एंगल थीटा हो पहले कैसे टेंशन प्रोवाइड कर रहा था वो सारा फोर्स अब नॉर्मल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है. इट्स स्टिल द सेम थिंग. इट्स स्टिल द सेम थिंग. ये सिर्फ पुल कर सकता है, इट कैन नॉट पुश. एंड या तो ये या बेसिकली इट्स लाइक 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ something को per second. We want no we want L upon G I guess because इसमें मीटर पर सेकंड पर आएगा ऊपर सेकंड आगे. या दैट्स द थिंग. दैट वाज फॉर अ सिंपल पेंडुलम. क्या यहाँ पे काम करेगा? आई डोंट नो. लुक्स वियर्ड. नो नो इट वोंट. द थिंग इज ये अलग ही ज्योमेट्री हो जाएगी. सो या दैट वाज स्लाइडिंग बेसिकली. अगर वो स्लाइड कर रहा होता देन इट वुड बी करेक्ट. नाउ इट्स नॉट करेक्ट. ठीक है. सो विल जस्ट डू दिस थिंग. सपोज ये एंगल थीटा है, स्मॉल ऑसिलेशन बोला है, व्हाटएवर. विल ट्राई टू डू दिस फर्स्ट ऑफ ऑल जनरल और फिर अपन इक्वेशन के टाइम पे इसको मिनिमाइज करेंगे. सो दिस इज द स्फीयर. ये पूरा रेडियस कितना है? कैपिटल आर. दिस थिंग इज स्मॉल आर. oh this comes is capital R and this thing is small r, right? Okay, cool. Right. So what's the retarding force basically, right? What is d theta upon dt? That's the question. That's going to be equal to the angular velocity. Okay, ये इसका velocity. Okay, d square theta upon dt square. What is that equal to? So ये हो जाता है v upon ये length. That length is a constant, just इसका acceleration in that direction upon ये length. That's the only thing, of course. So what is that acceleration at angle theta? So this is making it vertical. ये theta हो जाएगा. It's rotating about this point. यहाँ पे gravity act कर रही है. What component? mg in that direction, mg cosine theta like that, mg sin theta. mg sin theta is approximately mg theta, right? Okay, that times this, which is r, okay, upon inertia about this guy. So और ये क्या है? It's a small solid sphere, right? So 2/5 m 7/5 mr square basically. mr squared, right? That's the thing. That times of r. So ये हो जाएगा 5/7 g theta. That's the radius r over there. Well, whatever. That's this acceleration. अपने को इसको divide करना पड़ेगा by this whole thing. Oh, yeah, of course. That's what we got to do. So upon ye length, right? That's the thing. That's our negative d square theta upon dt square. So theta के साथ में क्या क्या आ रहा है? 5g upon 7 times of r minus r. इसका स्क्वायर रूट लो, 2 पाई करो, उसका रेसिप्रोकल स्क्वायर रूट का 7 times of r minus r upon 5g, which is which option? I think A option. Next question. Next is 18. 18 is find an actual frequency of oscillation of the system as shown in the figure. Pulleys are massless and frictionless. Springs and strings are also massless. So क्या है ये? System as shown in the figure. Pulleys and massless and frictionless. Okay, ठीक है. ये क्या है? दोनों सारे massless है. Just find an actual frequency, right? So suppose ये x आगे आ गया है, then right ये क्या हो जाएगा? ये कितना आगे आ गया होगा? This will be x upon 2 of course. या फिर एक काम करो ना, जो ये है ना, right? So जो last वाला जो है, will say कि वो in fact आगे आया है by x, right? Of course. Okay, that's a bad idea, I guess. Yeah, probably not worth doing that. अच्छा, अगर अपन ऐसे जाए, then this must have been like, I don't know, 2x. This would have been 4x, right? तो ये जो length है, right? Okay, this, yeah, that must have been the thing, I guess. अगर ये x से नीचे drop हुआ है, उल्टा जाते हैं पहले तो, अगर ये x से नीचे drop हुआ है, that just means कि right ये लेंथ तो constant रहती है, so ये नीचे drop होगा by x upon 2, right? Oh god, this is gonna be some problematic thing. x नहीं, काम करो इसको y बोलो. अगर ये y से नीचे drop हुआ है, जान दो क्या फर्क पड़ रहा है, just x. x से नीचे drop हुआ, this has dropped by x upon 2, okay. And then you got this whole thing. अच्छा, ये जो है it's dropped by x upon 2, तो x upon 2 लेंथ गई कहाँ? वो यहाँ पे क्रिएट हुई होगी. So for that this must be x upon 4 as expected. Yeah, that's this guy. अब उल्टा जाओ, अब इसको तुम x बोलो, इसको 2x बोलो, इसको 4x बोलो, फाइन.
That's the thing. So 4kx is this tension, so उसका डबल हो जाएगा, that's going to be 8kx like this. So उसका डबल यानी कि 16kx is what this guy suffers, right? So 16, yeah, okay. It's a proportional. I would say okay, 16k times, and we just want the natural frequency like x minus x naught. X naught jump away. We don't care about that. So this is equal to negative d square x upon d square. That just means 16k. Oh, by the way, upon m, right? So 4 square root of k upon m, uska reciprocal karo, and then 2 pi upon that whole thing, right? Or you can just go like that. So m upon 4k, which is not here. We want the frequency. Oh, okay, that's the angular frequency. 1 upon 2 pi of that, that's the frequency. So 1 upon 2 pi sort of 4k upon m. Yeah, these the answer. Next question, 19th. 19th is a small blob is attached to a light inaccessible thread of length L as a periodic time T, okay, where when allowed to vibrate as a simple pendulum. Okay, the thread is now suspended from fixed point O of a vertical rigid rod of length 3L upon 4. लाइट नेक्स्ट टू थ्रेड, ये एल की थ्रेड है, ओके. टाइम पीरियड इसका टी दिया है, वॉट एवर. when allowed to vibrate a simple pendulum, okay. So basically like t is equal to 2 pi square root of L upon G. Fine, that's one thing you can remember. और क्या है, the thread is now suspended from a fixed end O of a vertical rigid rod of length 3L upon 4. Okay. इतना तो pendulum performs periodic oscillations in this arrangement. अच्छा, तो पहले ये यहाँ पे जाएगा, उसके बाद में यहाँ पे रोटेट होगा. ओके फाइन. The periodic time will be, of course. तो पहले तो इसको यहाँ से यहाँ पे जाना पड़ेगा, and for that you just need t upon 4. ओके, उसके बाद में क्या, दिस थिंग इज 3L upon 4, राइट. इसका लेंथ चेंज हो गया, राइट. इसकी लेंथ चेंज हो चुकी है. वेलोसिटी जो भी रही होगी, वी डोंट केयर अबाउट दैट, वी जस्ट केयर अबाउट द टाइम पीरियड, राइट. ओके, सो t upon 4 to go from there to there. उसके बाद इसकी लेंथ चेंज हो गई, become 1/4 of that. That means कि जो टाइम पीरियड है that just became half of what it was previously, I guess. Yeah. So अब क्या है, t upon 2, and then you want to go back and forth like that. So plus 1 upon 2 of t upon 2, right? So ये पूरा टाइम पीरियड रहने वाला है. उसका फिर आधा ही चाहिए, because want to go like that and that. और फिर एक बार upon 4 because you want to go like this. That's the whole time period. This is going to be what? T upon 2 plus t upon 4, which is 3t upon 4. That's going to be A. Next question. No sweat. Next is 20. A thin rod of length L and uniform cross-section is pivoted at its lowest point P inside a stationary, homogeneous and non-viscous liquid. Okay, the rod is free to rotate in a vertical plane about the horizontal axis passing through P. What? Free to rotate in a vertical plane about a horizontal axis passing through P. Okay, the density of the material, okay, D1, smaller than density D2 of the liquid. Okay, so इसकी density, fine. The rod is displaced by a small angle theta. कुछ मास वगैरह दिया, डेंसिटी कुछ भी, ओके, डेंसिटी दी अपने को. इनफैक्ट क्रॉस सेक्शन क्या दिया आपने को, कुछ भी नहीं दिया ही नहीं इनफैक्ट. ओह गॉड, फाइन, जो भी है. The rod is displaced by a small angle theta from its equilibrium position and then released. The motion of the rod is simple harmonic motion. Okay, its angular frequency is omega. Right. So you know the deal. Omega is just equal to square root of sort of g upon L, where g is gravitational acceleration normal conditions होगा, right? But इस केस में उल्टा हो गया है. So क्या है ना, इस पे एक constant field लग रही है kind of in this direction, right? Which is how much? That's the question. Okay. ये सारे गंदे वाले वैल्यूज क्यों आ गए यहाँ पे? 2 और 3 और चल क्या रहा है यहाँ पे? It's a rod. It's not. Oh god, it's a rod, not a simple pendulum. Okay, cool. Gotta do it the proper way now. पहले G effective ढूंढ लेते हैं. What is G effective? It's upward. We know that. कितना है? So think about it. इसकी volume क्या है?
इसकी वॉल्यूम v ले लो, whatever, इसकी डेंसिटी जैसे d1, ओके, इसमें बॉयंट फोर्स कितना लगने वाला है, जी वी टाइम्स d2 माइनस d1, d1 डेंसिटी किसकी है, मटेरियल की, और ये लिक्विड की है, राइट, शुड फॉर द अपोजिट बिकॉज अपने को ऊपर लगाना है, सो या, एंड देन दिस थिंग अपॉन the mass, which is just v times of d1. So basically g times of d1 minus d2 upon d1, right? That's g effective. So g times of g dash बोल दो जो भी है, d1 minus d2 upon d1, right? Yeah, of course. हाँ, मतलब ऐसा थिंग, ये इसके हर पार्ट पे इस टाइप का फोर्स लगने वाला है बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, राइट? सो इट्स ऑलमोस्ट एज इफ तुमने दूसरा जी यूज कर दिया और जिसको अपन नॉर्मल करते हैं उससे अलग. ओके, एंड देन व्हाट, सपोज ये एंगल, सो नॉर्मल के लिए कैसा होगा, नॉर्मल केस के लिए इस एंगल थीटा एंड वॉट एवर स्मॉल एंगल दे रहे अपन, राइट? यू गॉट, ओह या ऑफ कोर्स 2D मोशन है ना, दैट्स गुड, इट्स अ 2D मोशन, इट्स स्टिल डूएबल, इट्स गॉट mg, और ये let's just say this thing is r for now, r is just l upon 2 by the way. Okay, cool. So क्या करना है अपने को, this thing is mg in that direction, that's theta, so mg sin theta, basically mg theta times r, right, upon inertia about this guy which is just ml squared upon 3 or whatever. एक काम करो, इसको l upon 2 ले लो, क्या जा रहा है तुम्हारा, ml squared upon 3, right, that's the thing, that's equal to our angular acceleration, I guess, negative angular acceleration, whatever. Sure, yeah, that's the thing. So ये क्या हो जाएगा, 3/2, ये m गया, 3/2 l g, यहाँ पे थीटा है, that's equal to alpha negative of this guy, of course. So square root of 3/2 g upon l, that's the natural frequency, angular frequency, right? You just want the angular frequency in any case. So just this thing, 3/2, और यहाँ पे g effective डाल दो, which is this whole thing. So d, ठीक है ना, g upon l, and got d1 minus d2 upon d1. That's the case. So 3/2 इसमें just option D. Next question. Yep, that's the thing. Next question. So question number 21. 21 is a thin rod of mass m, length L is hinged at its upper end and released from rest from a horizontal position. Thin rod of mass m, length L is hinged at its upper end from a horizontal position like this. Okay. That's length L. Huh? Okay. Mass कितना? Mass m जो भी है. The tension at a point located at distance L upon 3 from the hinge point. Achha, like this. L upon 3. Whatever. When the rod becomes vertical. Okay, when the rod becomes vertical. Fine, fine, fine. No big deal. It's still doable, you know. क्योंकि इसका जो पूरा center of mass लेने वाला है, we can figure that out, and then we know उसकी velocity क्या है, and उसका angular acceleration तो 0 हो जाएगा because gravity act नहीं कर रही है. Okay, cool. We can do this thing. So निकालो angular velocity कितनी रहने वाली है. Think about it. Actually अपन निकाल चुके, नहीं still have to go for it. So half I omega square. So I कितना है इसमें, ml squared upon 3 and then omega square. This is equal to जितनी energy गई होगी, it just becomes like vertical. तो हाँ ठीक है ना, you just know कि center of mass का energy change ही अपने को देखना है basically. So mgh mgl upon 2 I guess, yeah, l थोड़ा से जो भी है गया, ये m गया, ये एक और l गया यहाँ पे. So l omega square is equal to 3 times g times nothing. Okay, that's the case. Okay, cool. तो अपने को चाहिए क्या है, we just want ये कितना रहने वाला है, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का, राइट, इसका सेंटर ऑफ मास ये कितना बचा है, 2l/3, उसका हाफ यानी कि l/3, ये l/3 का होगा. सो दिस इज 2l/3 अवे फ्रॉम दैट सेंटर, राइट. सो right, 2/3 से multiply कर दो, just get like 2l/3 and then that has omega square is equal to 2g, right? Okay, और mass कितना रहेगा ये पूरे इसका, just 2/3, so 2/3 m से multiply करो, which means that 4/3 mg is the force required for this system जब ये vertical हो जाएगा, so to keep it upward, that's the centripetal force, yeah, or yeah, that's the thing, right? So 4/3 mg I guess. और वो नहीं है यहाँ पे, इंटरेस्टिंग, क्यों नहीं है,
ये तो सही नहीं हो रहा है. That must have been there, you know. That must have been there. This doesn't make sense. क्या गलत कर रहा हूँ मैं इसमें? ये इक्वेशन तो सही है ना, ऑफ कोर्स, बिकॉज हाफ एम आई ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, या दैट्स द थिंग, इट्स करेक्ट. ओमेगा स्क्वायर वही है व्हेन द रॉड बिकम्स वर्टिकल. या क्या क्या गलत कर रहा हूँ मैं? ये तो करेक्ट है यार. ओके, सो यू गॉट ओमेगा स्क्वायर, ऑफ कोर्स. व्हाट डू यू वांट? यू जस्ट वांट इसका ओमेगा स्क्वायर आर, राइट? That will be the centrifugal force required for this complete body. Yeah, I don't get it. उसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है? Because of course center of mass is going like that. हाँ, somehow ये करेक्ट नहीं है ऐसा बोल रहे हैं. इसमें अपॉन 11 वगैरह कैसे आ रहा है यार? तो कुछ है. You know, this doesn't make any sense. ठीक है ना, L upon 3 दूर है. How does that make any difference? No, it's L upon 3 away. That's for sure. तो ये L upon 3 रहेगा. बस 2 L upon 3 कहाँ था? That's where the center of mass is, right? That's the only direction that is pushing in that direction, of course. Right? तो ये correct नहीं है. इनके answers correct नहीं है. It has to be just 4/3 mg. No other way, right? ये पूरा 2/3 mg. ये just 2 L upon 3 रहने वाला. We can say that for sure. Just move on. Next question. कुछ भी अजीब है. Next, 22nd. 22nd is two identical simple pendulums A and B are fixed at the same point. They are displaced by an angle alpha and beta. Okay, and so alpha beta is small and okay, and released from rest. Find the time after which beta reaches its initial position for first time. Two identical pendulums A and B. Okay, fixed at the same point. Released, displaced by angle alpha beta and released from rest. Find the time after which B reaches its initial position for the first time. I mean, okay. Oh, okay, तो ये कोलाइड कर सकते हैं. ये लेंथ सेम है, आई अज्यूम. व्हाटएवर. कोलिजन इलास्टिक लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग्स इज L. फाइन फाइन फाइन. सो क्योंकि इलास्टिक कोलिजन इज लाइक, ओह वेट, राइट, इसको T1 बोलो, इसको T2 बोलो, इसके टाइम पीरियड्स को. सो यहाँ से यहाँ जाने तक का पहला टाइम पीरियड क्या रहने वाला है? T2/4, राइट. फिर प्लस उसके बाद में क्या होगा कि इसकी जो वेलोसिटी है दैट इज ट्रांसफर टू A एंड इसकी वेलोसिटी ट्रांसफर टू B, राइट? दैट्स व्हाट हैपेंस यूजुअली. Yeah, right. Energy conservation भी हो गया and momentum conservation भी हो गया because, right. Wait, momentum conservation नहीं हुआ ना because, right, उनकी velocities just change हो गई. That doesn't make them. Wait, momentum conservation हुआ कि नहीं हुआ इसमें? हुआ ना, हुआ. It's as if ये आगे चले गए हो खुद के. Yeah, so वो हो गया. ठीक है, उसके बाद में क्या? उसके बाद में बी को अब इसकी वेलोसिटी मिल चुकी है, सो जस्ट गोना गो बैक और ये अल्फा तक रीच करेगा. सो यू गॉट T1/4, राइट? दैट्स द थिंग. हाँ, दैट्स वियर्ड. इज दैट करेक्ट? इट मस्ट बी जस्ट ऐसे हुआ. अच्छा नहीं, अभी अल्फा पहुंचा है. वी हैव टू गो फॉर बीटा इनफैक्ट. फिर ये वापस होगा. सो वी गॉट वंस अगेन जस्ट T1/4 एंड देन फाइनली अब ये बीटा पे जाएगा. सो फॉर दैट T2/4. दैट्स गोना बी जस्ट T1 plus T2/2, आई गेस, राइट? Understandable. So it's going to be just, you know, pi and then square root of L upon, oh wait, इन दोनों का टाइम पीरियड तो सेम ही है. oh yeah, of course, दोनों का टाइम पीरियड सेम है. So just the time period T, that's the thing. Yeah, which is just 2 pi square root of L upon T. So B is the answer. Next question. The third. A child is standing on the edge of a merry-go-round that has the shape of a disc. Okay, and as shown in the figure, the mass of the child is 40 kg. The memory, okay, इसको लिखना ही पड़ेगा. Okay, disc. Inertia just, you know, capital M, capital R squared upon 2, whatever. The mass of the child is 40. The merry-go-round has a mass of 200 and a radius of 2.5. Okay, and it is rotating with angular velocity of 2. Okay,
The child then walks slowly towards center of merry-go-round. What will be the final angular velocity of the merry-go-round when the child reaches the center? तो क्या angular momentum conserve हो गया, अब उतना ही है, right? The size of the child can be neglected. Okay, child is the center, ठीक है ना? So like m times r squared plus इसका जो भी inertia था पहले, that times initial of angular velocity is omega naught बोल दो, that's equal to final सिर्फ inertia इसका ही है, then that times omega. So omega is just mr squared plus I, which is like capital M r squared upon 2 upon capital M r squared upon 2 times omega naught. That's the thing. R squared plus cancel कर डालो. This is the thing. So M is 40 and this is what? 200. So 100 over there. यहाँ पे 100 आ जाएगा. 14 upon 10. So 1.4 omega naught. So 1.4 of जो previously था. That's going to be 2.8, I guess. So D is the answer. Next question. 24th. 24th करते हैं. 24th is an uniform semi-solid sphere is placed with flat surface on a rough inclined plane as shown in the figure. Friction is sufficient to prevent slipping and the minimum angle theta at which the toppling occurs. Uniform semi-solid sphere placed with flat surface. Time क्या हुआ है? I don't know कितना time हुआ है. इसमें दिख नहीं रहा है. Whatever. Okay. 30 क्वेश्चंस तो करके जाने अपने को. यूनिफॉर्म सेमी और पहले कितने हुए थे? 12 हुए थे, राइट? सो अपने को कितने करना है? 12 से कितने हुए थे? आई गेस 11 हुए थे. सो वी गॉट टू गो टिल 41. ओह गॉड, काफी दूर है. यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर सेमी सॉलिड स्फीयर इज प्लेस्ड विद अ फ्लैट सरफेस ऑन द रफ इंक्लाइंड प्लेन एज शोन. ओके, if friction is sufficient to prevent slipping, then the minimum angle theta at which toppling occurs. Shit. Sufficient to prevent slipping. Semi-solid sphere is placed with flat surface on the rough inclined plane. Wait. Are you sure ये correct है? मैंने सही से पढ़ा है? Semi-solid sphere. ठीक है, ये semi-solid sphere है, placed with flat surface on the rough inclined plane. Friction is sufficient to prevent slipping. अच्छा, and the minimum angle theta. Of course. Sorry. कुछ तो भी अजीब हो रहा था. At which toppling occurs, right? तो friction को तुम infinity assume कर लो, जो भी है friction coefficient that is. ठीक है ना? तो एट सम पॉइंट क्या हो जाएगा? इसका जो सेंटर ऑफ मास है दैट विल जस्ट बी एट दैट पॉइंट, राइट? या और इसका सेंटर ऑफ मास कब रहता है? मतलब कहाँ पे रहता है? इट्स फॉर दिस थिंग. या दैट्स अ प्रॉब्लमेटिक थिंग, इजंट इट? सो वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, बट या दैट ओके अकॉर्डिंग दैट सेंटर ऑफ मास कहाँ पे रहने वाला है? वी डोंट नो. वी जस्ट डोंट नो. ओके, लेट्स डू द थिंग. क्या है ये? इट विल बी, सो दिस इज एंगल थीटा एंड व्हाट नॉट, और व्हाट इज दिस थिंग? ओके, ये आर हो जाएगा. वी वांट दिस होल डिस्क, राइट? उसका पूरा मास. दिस थिंग इज स्मॉल आर, इट्स जस्ट इक्वल टू आर टाइम्स cosine theta. Okay, so area is just it's supposed to be area, I guess. Okay, it's supposed to be pi r squared वगैरह आने वाला था. ये चीज का स्क्वायर just r squared cosine square theta. Okay, and then you got this times dh. So this length, so a dh is just equal to pi r squared cosine square theta times. अब dh कितना होने वाला है? ये right, r theta नहीं, not r theta, it's got this thing. अच्छा, h कितना है? It's just r sin theta, उसका डेरिवेटिव r cosine theta d theta, right? So r cube cosine cube theta, and then you got d theta finally, right? You want to integrate this thing? Sure. Just want to integrate that, and then ये pi वगैरह हटा दो, सारे कांस्टेंट हटाओ, r cube हटा दो, cosine cube theta d theta आ जाएगा. It's going from 0 to pi upon 2 whatever upon. So ये, oh god, area dh. Okay, that's just the, उससे अपने को वॉल्यूम मिल जाएगी, राइट? दैट्स नॉट व्हाट वी वांट. ये डिनोमिनेटर चाहिए अपने को. व्हाट वी वांट इज दिस टाइम्स इसका y कोऑर्डिनेट. सो वी वांट इंटीग्रेशन ऑफ, सो y कोऑर्डिनेट्स, इट्स गॉट साइन ओवर देयर, राइट? इट्स गोना बी कोसाइन क्यूब थीटा sin थीटा d थीटा फ्रॉम 0 to pi upon 2, आई गेस, राइट? दिस इज द थिंग. ये चीज करना हार्ड है यार. यू कैन जस्ट, एक्चुअली यू कैन, इट्स नॉट दैट हार्ड, टर्न्स आउट. या so using that, जो अपने, right, it's supposed to be upon 3 आ जाएगा यहाँ पे, and C1 चाहिए अपने को, and then ऊपर जो है it should be an E1
number 2, right? And then integration of 0 to pi upon 2 of c1 cosine. So yeah, that's the thing. And this is just equal to 1, so that's 2/3. Each is 2/3 है. What about this guy? So sin theta is like, okay, negative डाल दो यहाँ पे, cosine theta आ जाएगा, whatever. Cosine power 4/4, so you got 1/4 and square from 0 to pi upon 2. एक तो 1 होने वाला है, ये होगा God, nothing on 2/3, huh? Crazy. I don't think it's correct. कुछ तो भी गड़बड़ हो रही है, right? Yeah, what else? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ इसमें हो रही होगी. That's what I can say. Oh God. ठीक है, जो भी है, just deal with it. Supposed to be 3/8. I guess maybe just 3/8. इसमें कहीं मुझे पाए वगैरह दिख नहीं रहा है, so it's good enough, I assume. Right. So जब ये एकदम vertical हो जाएगा, right? Call this thing as alpha. Alpha is, अच्छा ये देखो y value पता है. What is this? Call this thing as alpha. This is 3/8 times r, और ये just r है. So tan alpha is just equal to 3/8, whatever. तब अब क्या हो रहा है? ये just completely vertical हो चुका है, right? Its center of mass is just above that. और ये theta है, right? This is angle alpha. So alpha plus theta has to be pi/2, right? So that just means tan of theta is like इसका reciprocal 8/3. So it's tan inverse of 8/3, which is going to be option C. Next question. यकीन में तो मुझे पूरा डिराइव करना पड़ा बीच में, बहुत सारा टाइम वेस्ट हो गया. 25th is a solid sphere and a solid cylinder having the same mass and radius roll down the same incline. The ratio of their acceleration is solid sphere, solid cylinder having the same mass and radius. Okay, same mass and radius, huh? Roll down the same incline. Acceleration था, okay fine, no big deal. So general कैसा रहने वाला है? Just I about contact point. So क्या हो जाएगा ये? mg sin theta times r upon inertia about contact point, and that times r, that's the thing. So इसका अपने को रेशियो चाहिए, it's like 1/i of the, पहले अपने को चाहिए sphere and then 1/i of the cylinder, right? So इस केस में क्या आता है? 2/5 आता है यहाँ पे, so like 5/2 is what we are comparing. और यहाँ पे क्या आता है? upon 2 आता है just, so ऊपर 2 भेज दो. That's cylinder, that's a solid sphere, of course. Oh shit, no. About the contact point चाहिए अपने को. Yeah, okay, 2/5 plus 1, 7/5 आता है ना यहाँ पे फिर. And then यहाँ पे क्या आता है? Is to 1/3/2. It's supposed to be 5/7 is to 2/3. That's the acceleration, right? Center of mass, of course. Yeah, that's like 15 is to 14. Next, so that's option C. Next question. Next is 26. पता नहीं क्या टाइम होगा अभी. A wheel 4 meter in diameter rotates about its fixed frictionless horizontal axle. ये wheel है, ये axle है, 4 meter in diameter, मतलब कि r is just 2. Okay, r is 2. Rotates around a fixed frictionless horizontal axis, which is okay, about which its moment of inertia. So what of inertia is just 10. Fine. A constant tension of 40 is so T is equal to 40 is maintained at the rope wrapped around the rim of the wheel. If the wheel starts from rest, find the length of the rope unbounded till t equal to 3. Okay, cool. So till t equal to 3, angular मतलब थीटा कितना कवर कर चुका होगा, right? So इसका angular acceleration निकालो first of all. 10 times 2 यानी कि क्या? Is 10, right? It's 10, of course. And that's just like 20. That thing upon 10 is just 2. So it's the angular acceleration it's just that. So you got half alpha t square is supposed to be just t square basically. And t equal to 3 भी हो जाएगा 9. So इसका angle जो अभी तक हो चुका होगा, it must have been, yeah, उतना एंगल हो चुका है, which means right, उतना थीटा वाली वैल्यू अभी यहाँ पे आ चुका है, उतनी स्ट्रिंग निकल गई, right? So r theta, so 9 times r, रेडियस कितना है? 2. This thing 18, 18 in SI units. There we go. C is the answer. Next question. सब कुछ SI units में था ना, kg per meter, right? ये मीटर में है, kg मीटर स्क्वायर में, न्यूटन्स और, yeah, that's correct, that's correct. Next question. 27. पार्टिकल, हाँ वही है ना, of course. What else? Next, a particle of mass m is projected velocity v making angle 45 degrees horizontal. The magnitude of the so एक काम करो ना, v को just let it be square root, yeah, okay, v upon square root को you बोल दो. Okay, the magnitude of angular momentum of the of the projectile
about the point of projection when the particle is at its maximum height. Okay, at that point, right? तो बस height निकालो तुम्हारी, height क्या होने वाली है, क्या हो जाएगा, b माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू, राइट, दैट थिंग. सो ओके, वो तो जीरो हो जाएगा, राइट, वर्टिकली इज गॉट यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh. दैट शुड बी थिंग, दैट्स द मैक्सिमम हाइट. और आई गेस दैट शुड मेक सेंस. h is just u square upon 2g, more specifically u y square upon 2g, but whatever. Yes, yes, that must be correct. What could go wrong? Right, that is the thing. So you got h. Fine. और तब अपने को चाहिए the magnitude of angular momentum, right? That is like, okay, mr cross v, whatever. मास m है, इसका r cross v क्या रहने वाला है? Yes. So mu cube upon 2g. That's the thing. U is just, v upon square root 2. It's like mv cube upon क्या हो जाएगा, 2 square root 2 डिनोमिनेटर में, 4 square root 2g. That's the thing, which is कौन सा वाला, b, I guess. Next question. 28. चलो 28 is a solid sphere of radius r and coefficient of linear expansion alpha rotates about what? Okay, what's axis passing through? It's a sphere, okay, passing through its center in absence of any external torque. What should be the change in the temperature so that its angular velocity increases by 1%? Oh god, angular velocity increases by 1%. What do you know? We know that the torque क्या है, कोई नहीं है उसमें. Fine, angular momentum is conserved. It's like I omega is kind of constant, मतलब कि, right? What does that mean? di upon I plus d omega upon omega is equal to 0, right? So इसका चेंज 1% को यार प्लस माइनस में डाल दो, फर्क नहीं पड़ता. So di upon I is equal to plus minus 1%, right? So 1% अपन किसी पॉजिटिव वैल्यू से डील करते हैं. So इसका इनर्शिया चेंज हुआ इतने से, but I is just like mr squared upon 2. So di upon I is like 2 dr upon r. So dr upon r is equal to 0.5%, right? That's what should happen. We can just say it's approximately जो भी है, right? Okay. Yeah. And linear expansion is, okay, radius r है, कुछ linear expansion alpha. Awesome, I guess. Okay, right, alpha is volumetric distance. ठीक है, जो भी है हो जाएगा, right? So this thing, delta r is just, right, supposed to be r naught times, so delta r is just r naught times alpha t, right? Alpha dt, whatever. I guess that's right. हाँ, वही रहता है ना. So there we go. It's just supposed to be क्या, ये जो पूरी चीज है is just equal to alpha delta t, right? That is approximately 0.5%, which is like 1 upon 200. So delta t अपने को क्या चाहिए, 1 upon 200 times alpha t. Wow, that's perfect. Okay, so अपने को करना क्या है, so that its angular velocity increases, right? तो इसका अपने को inertia कम करना है. And for that, of course, your r square values must decrease. So अपने को radius decrease करना है. For that, the temperature must decrease. So अपने को इतना decrease करना है, right? So 1 upon 200 alpha decrease. That's option D. हाँ, somehow ये हो गया. Next question. 29. A particle of mass m is released from rest at point A in the figure, falling freely under gravity parallel to vertical bicycle. What? Mass m released from A. A से release किया. Mass m कौन सा? जो कुछ दिख नहीं रहा है. Okay. Falling freely under gravity parallel to the vertical y-axis. Okay. The magnitude of the angular momentum of particle about point O when it reaches point B. Okay. B like that, right? But then angular momentum, of course. Velocity निकाल लो, you got this thing, and then B times that, whatever. हाँ ठीक है ना, कर सकते हैं, no big deal. Wait, अपने को तो थीटा वगैरह यूज नहीं करना है ना? Thank God अपने थीटा यूज नहीं करना है, तो हो गया होता. Okay. Right. So of course, like यहाँ पे, and it's initially rest पे था. Yes. So square root of 2gh, right? That's the velocity at that speed at that point. यार तुम क्यों बीच में आ रहे हो?
Okay, square root of two GH is like that, and then of course R cross B, तो मेरे को B cross C चीज B times that. That's the thing. बस दूसरा वाला कंपोनेंट तो बस जीरो हो जाएगा. Yeah, that's the angular momentum. Right. ये इतना डाउटफुल तो नहीं होना चाहिए. MB, of course, MB square root of वो सब. So B is the answer. ये डाउटफुल क्यों हो सकता है? I don't know. 30 करते हैं. क्या बैटरी? Okay. Okay, fine. 30 करते हैं. The equation of friction between block of mass m and 2m is mu equal to tan 2 tan theta. अच्छा. Okay, there is no friction between block of mass 2m and inclined plane. The maximum amplitude of a two block system for which there is no relative motion between the blocks. Okay, no relative motion. And you want the maximum amplitude, huh? There is no, okay, whatever. Friction between blocks of mass 2m and inclined plane. Cool. Right. So यहाँ पे g sin theta तो रहने वाला है. उसको भूल जाओ. Yeah. So just भूल जाते हैं. You don't need that. Right. Ouch. Right. मतलब रहेगा जी साइन थीटा कहीं तो भी बीच में इक्विवेलेंट पॉइंट रहने वाला है व्हाट नॉट. एक्सेलरेशन ऐसे से चेंज हो रही राइट. Yeah, just need to figure out इसका equation and then you will be good to go. Right. मुझे सिर्फ m का करने वाला है. So it's like g effective is just g cosine theta whatever. और तुमको इसको ऐसा करना है राइट. So at some point इसको इक्विवेलेंट मिलने वाला है at some x value I don't know. What you want is maximum amplitude of two blocks for which there is amplitude, huh? Amplitude, like okay, ऐसे से move करने वाला है. Okay, ठीक है ना, कर सकते हैं, इतना कुछ बुरा भी नहीं है. This normal block mass system, what could go wrong, right? It's just a sine of omega t. What's omega? Omega is square root of come on. कितना ये just g sine का like okay, it just sorry इसका स्प्रिंग का देखो ना kx upon ये masses combined कितने just 3m. So k upon 3m, right? Sort of k upon 3m and this times t जो भी है that's how this would probably be. तो इसका अपने को acceleration देखना है. Isn't that just yeah okay mass m का acceleration देखना है right? And the maximum acceleration is of course जो कि friction provide कर सकता है. So you would want कि वो somehow overtake हो जाए right? So maximum acceleration क्या होने वाला है? Of course it's ak upon 3m right? So amplitude times k upon 3m जो भी है yeah. And you want this to be basically bigger than or equal to somehow bigger than or equal to जो कि friction provide कर सकता है which is so mu times g effective I guess. Yeah, because ये सिर्फ उतना ही है. So okay, this should work I guess. Right. There is no relative motion between the blocks. Yeah, that's gonna do the thing. So a is bigger. इसमें square root वगैरह कहीं आ रहा है क्या? I don't think there should be any square roots. Just mu and then okay, so like 3m mu. G effective is just g cosine theta upon k, right? और वो किस option पे है? C option just go sine theta. What? No, you won't want cosine theta और इसमें कहीं है ही नहीं है. G sine theta square root of k upon m. What? Maximum amplitude, right? So इससे मैच होना चाहिए, इसमें क्यों नहीं मैच हो रहा है? अच्छा, what about this guy? नहीं, हर जगह पे सिर्फ sin theta है. Doesn't make any sense. Why should that be the case? Oh, okay, mu is 2. मैंने पढ़ा क्यों नहीं वो? Mu is 2 tan theta. Okay, then it's just like okay, are we sure? करेक्ट कर रहा हूँ मैं? ऊपर 3 आ रहा था. So friction between the blocks. It's 3m right there. That should be the thing, of course. Hopefully ये हो जाए. So mu is 2 tan theta. Just put that in there. It should be like 6 and then sine theta mg upon k. कौन से ऑप्शन है? कहीं भी नहीं है. इसमें 3 mg sine theta upon k है, but okay. I don't know उसका क्या करूँ. Right, not looking good, ये कैसे हो गया? None of these. और क्या कर सकता हूँ मैं इसमें? Some point yeah, like
Ampere is just this thing and sum of all that stuff. It's gotta be the thing. It's got to be the thing. Square root of k upon 3m. What else could it even be? Right? Maximum क्या रहने वाला है? K upon 3m times a. That's the maximum you can provide it. Of course, no other way. Let's move on. Next question. तो 30 का छोड़ दो. Most likely incorrect है, but yeah. 31. 31 is a thin tablecloth covering a horizontal table and uniform body of mass. Sorry, एक काम करते नहीं यार. I think ये question ज़्यादा time ले रहे than expected, so I guess we should stop now. ठीक है, 20 question in 1 hour. Hopefully उतना तो हुआ होगा. नहीं तो कुछ और कम करना पड़ेगा. See you guys in the next video. Bye.